Okay, in the last session we was in ये last slide था अपना previous session का. So I will like to revise it very quickly. So in the last session we have seen few points from jurisprudence from the DPCO Drug Price Control Order DPCO Act. So in that there is one formula for calculation of retail price of drug. So fixed price of schedule formulation by government under the provisions of DPCO Act. So retail price of formulation is calculated by using this formula. What is the formula? That is equal to retail price is equal to RP is equal to MC plus CC plus PM plus PC plus 1 RP is equal to retail price is equal to MC plus CC plus PM plus PC into 1 plus MAP divided by 100 plus ED. So what is RP? RP is nothing but the retail price. MC is nothing but the material cost. Then CC is nothing but the conversion cost. PC is nothing but the packaging charges. PM is nothing but the packaging material. Okay, packaging material, and ED is nothing but the excise duty. So retail price equal to material cost plus conversion cost plus packaging material plus packaging charges plus into 1 plus MAP. What is MAP? Maximum allowable post marketing expenses. So that will give you plus ED, that will give you the retail price of drug. फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं. So either they will ask you anything. So already they have regarding this. What is the MAP? Are you able to see the screen properly? So remember retail price of drug. Retail price of drug is equal to MC plus CC plus PM plus PC into 1 plus MAP divided by 100 plus ED. ED is excise duty. What is MAP? Maximum allowable post marketing expenses. So this MAP, this maximum allowable post marketing expenses, they are different for different category of drug. So based upon the need, based upon the usage. So in the DPCO Act they have classified the drugs into two categories. So category 1, category 1 and category 2 drugs, or you can say MAP is 75% for category 1 drugs, and those drugs which are used in the national health program, for example national malaria control, national TB control, whatever drugs those are used for national health program. So on that MAP is 75%. Then those category B, MAP is 100% on category B. Those drugs which are other than category 1. Then we have seen this also display of price under the DPCO Act, that is labeling condition होता है. Now today's session start from this slide. Okay, important points from various act. So first one is nothing but the government analyst. So what is government analyst? So it is government analyst, the definition is given under the Drug and Cosmetic Act 1940. So according to DNC Act, what is government analyst? So government analyst, remember it is appointed under the section 20. Okay, government analyst is appointed under the section 20 of Drug and Cosmetic Act. Okay, remember question as it is, there was a question. So government analyst is appointed under the section 20A of Drug and Cosmetic Act, and it is a public servant. Okay, appointed by government or state government. So this central government or state government may appoint government analyst for testing of various kind of samples sent by your drug inspector. So पहले आपको बोला है कि ड्रग इंस्पेक्टर ड्यूटी क्या है कि एटलीस्ट twice he has to visit the industry where there is a production of various drugs. At least twice he has to visit, or he has to inspect the stores where drugs are stored and sold. So remember the government analyst first. We'll see after that drug inspector. So government analyst is appointed by either central government or state government under the section 20A of Drug and Cosmetic Act. Question as it is आ चुका है इसके ऊपर. Now what is the role? To analyze the test sample of drug and cosmetics sent by drug inspector or other personnel, and to furnish the report, to submit the report of result of analysis in accordance with the procedure laid down under the DNC Act. Then again, on arrival of sample, this government analyst will receive the sample. It will receive the sample sent by drug inspector. He will check the labels
on the package, whether it is properly sealed or if there is any tampering, etc., etc. Then he will analyze the drug according to the standard operating procedure. He has to submit the result of analysis, that is certificate of analysis. After analysis, this government analyst has to submit the report of analysis in triplicate. Triplicate matlab 3 copies, duplicate matlab 2 copies. Government analyst has to submit the report of analysis, COA, certificate of analysis, in triplicate, 3 copies में भेजना है. So that is under form number 13. So after analysis, he has to supply the report of analysis in triplicate in the form number 13. दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. DI. Okay. Next one is drug inspector. So government analyst appointed under section 20A या फिर 20 भी याद रखो तो भी चलेगा. So under section 20 or 20A of the drug and cosmetic, and he has to perform the analysis of samples. And government analyst works in the government testing laboratory like CDL, etc., etc. तो उसका head कौन होता है? Who is the head of state drug laboratory? As it question was there in the drug inspector 2008, MPC drug inspector 2008 पेपर जाके देख लो. Okay, so who is the head of state drug laboratory? Remember, okay, remember drug controller of India, DCO is the head of state or central drug laboratory. So यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम क्या रहेगा? सैंपल जो भी आया है, ड्रग इंस्पेक्टर ने जो भी सीज किया है सैंपल या फिर जो भी सैंपल भेजा है उसको पूरा की पूरा एनालाइज करना अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. एंड उसके बाद में क्या है, उसको रिपोर्ट करना है. सो ही हैज टू प्रोवाइड द रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस in triplicate. Triplicate means 3 copies in the form number 13. Now next one is the drug inspector. So remember, drug inspector is also the definition of drug inspector is also given under the Drug and Cosmetic Act. Now central government as well as state government both has power to appoint the drug inspector for their respective state or union territory. Now drug inspector is appointed under the section 21 of Drug and Cosmetic Act, GPAT 2022 question. So drug inspector is appointed under section 21 of Drug and Cosmetic Act. Question as it is दो चार बार आ चुका है. Now what is the role of this drug inspector? So to inspect the premises where drug and cosmetic is being manufactured or tested or stored or distributed or exhibited to sell. So जहाँ पे भी ड्रग है, भले ही वो आप वहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या भले ही वहाँ पे ड्रग स्टोर करके रखा है. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? इंडस्ट्री में. स्टोर कहाँ करते हैं? वेयर हाउसेस में. ठीक. डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करते हैं? रिटेलर को. कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स. ओके. देन एग्जिबिटेड टू सेल मतलब बेचने के लिए रखना. ओके. बेचने के लिए कहाँ पे रखते हैं? रिटेल स्टोर में. सो टू इंस्पेक्ट, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर? To inspect the any premises where drug and cosmetic being manufactured or tested. Okay, manufactured or tested or stocked or distributed, exhibited to sell. So to take the sample of any drug and cosmetic, that is also a function of your DI. Okay, so DI will visit your manufacturing unit or retail drugstore. He will ensure that this compliance is being observed. So according to GMP. So whatever requirements are there in the industry, whether that requirement are being fulfilled by industry or not, your drug inspector has to visit industry twice a year, at least twice a year. कुछ बुक्स में twice a year दिया है, कुछ बुक में once a year दिया है. So आप twice a year याद रखो. So your drug inspector has to visit. He has to inspect the premises where there is a manufacturing, storage or distribution or testing of drugs or sale of drug. So he has to inspect those kind of premises at least twice a year. And he can take the sample of any drug or cosmetic. He can take a sample of any drug or cosmetic for testing purpose. He will ensure whether compliance are followed by the place or not. So if you are selling a drug, so if you are having retail drugstore, so what is the compliance? Whether you have fridge or not, whether you are selling expired drug or not, whether you are selling misbranded drug or not. So he has to inspect that. He will inspect the your inventory. He will ask for records.
where drugs are being purchased. Okay, what is the record of sale? So he used to check it. So particularly regarding the narcotic and psychotropic drugs, sedulox drug, then if you are sold as a veterinary drug, then whether that veterinary drugs they are being sold along with the other human use drug. So if such condition is there, he may seize the stock. So you have, if अगर आपके स्टोर में वेटरनरी प्रोडक्ट भी है, तो आपको एक अलग से रैक में अलग से रखना पड़ता है और वहाँ पे लेबल रखना पड़ता है वेटरनरी ड्रग्स नॉट फॉर. तो ऐसा मतलब such kind of compliance he has to ensure. He can stop search any vehicle, okay, for any convenience for carrying the drug. Okay, so he can stop any vehicle or any convenience where there is a carrying a drugs or cosmetic in reference to which offense has been committed or being committed. अगर उसको कोई कंप्लेंट किया कि सर यहाँ पे इलीगल तरीके से आपका ये इलीगल तरीके से ये रेमडेसिविर लेके जा रही है, वो उसको कंप्लेंट किया तो वो लेग वहां से निकलेगा, देखेगा कहाँ पे, तो वो ही कैन सीज, मतलब ही कैन स्टॉप एनी व्हीकल. से पता चला कि उसमें ये जो कंप्लेंट करने वाले थे वो बहुत चालाक होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का कलर, ड्राइवर का नाम, सब कुछ मालूम होता है, वो कंप्लेंट मार देते. ड्रग इंस्पेक्टर जाता है, उसको पकड़ता है, वो सीज करता है, देखता है सब, ही कैन स्टॉप द व्हीकल, ही कैन सर्च वेदर remdesivir is being sold by illegal way, like that. He can stop, he can search any vehicle or conveyor where there is a carrying of drug and cosmetic in reference to which offense has been committed, जहाँ पे गुनाह हो चुका है या फिर होने वाला है. So where offense has been committed or being committed. Now what is, okay, to what is, okay, so what is the duty of drug inspector? So to inspect at least twice a year, at least twice a year, the premises license for sale of drug and cosmetic. So drug inspector has to inspect the premises or the store where there is a sale of drug at least twice, and to investigate complaint made to him in writing. अगर किसी ने आपके कंप्लेंट कर दिया कि ये मेडिकल पे पुरानी दवाएं बेच रहे हैं, ये मेडिकल पे विदाउट प्रेस्क्रिप्शन दवाएं बेच रहा है, ये मेडिकल पे कुछ घपला है, तो if anybody has completed, so to investigate the complaint made to him in writing, that is the role of your drug inspector, that is the duty of your drug inspector. Again, to inspect at least twice all the premises where there is a manufacturing of drug and cosmetic. To inspect at least twice a year all the premises licensed for manufacturing of drug and cosmetic to ensure the condition of license. To ensure the condition of license means to ensure the compliance according to GMP सब कुछ हो रहा है या नहीं, उसको देखना है. Two inspector they used to visit industry to check the compliance, whether their compliance is being observed or not. So that is the duties of drug inspector. So I have just enlisted most important point. So if you want to read in the very detail, so how a drug inspector can seize, what kind of receipt he will give, what kind of okay, so he can seal your premises at least 20 days, at least for 20 days. ये होता है ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा कि मान लीजिए कि वहां पे आपका कोई गफला हो गया है या फिर आपने कोई कांड किया है, तो फिर वो पकड़ेगा आपको, और पकड़ने के बाद 20 दिन के लिए आपका मेडिकल सील कर देगा, उसके ऊपर स्टैंप लगा देगा, सो दैट नोबडी कैन रीओपन इट. वो लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, पावर, ठीक है. सो इफ यू वांट टू रीड इन द डिटेल यू कैन रीड फ्रॉम एनी jurisprudence book. Particularly there are two, you can read from N.K. Jain, or you can read from Forensic Pharmacy CK, or you can read from Yadav and Mali, Jurisprudence by Yadav and Mali. Okay, so there are different work. Okay, so duties of drug inspectors, powers of drug inspectors, etc, etc. So if you want to read in the detail you can read, but on this paragraph only they have already asked at least 2 or 3. इसके ऊपर ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन कैसा आता है, तो as per the Drug and Cosmetic Act 1940, drug inspector is appointed under the following section. तो वहाँ पे देखिए section, remember drug inspector is appointed under section 21 of DNC Act. Government analyst is appointed under section 20A of DNC Act. So what is the duties of drug inspector, ये भी याद रखो. उसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा है. So drug inspector should inspect at least how many times per year, कितने बार उसने विजिट करना चाहिए या फिर इंस्पेक्शन करना चाहिए आपका मेडिकल का या फिर इंडस्ट्री में.
So remember, drug inspector should inspect industry. Drug inspector should inspect the premises where there is a sale of drug or where there is a stock of drug or there is store of drug at least twice a year. कम से कम 2 बार इंडस्ट्री को भी 2 बार विजिट करता है ईयर में, हर एक साल में 2 बार कम से कम विजिट करना पड़ता है उसको इंडस्ट्री को, एंड 2 बार आपके मेडिकल को विजिट करेगा at least twice a year. Okay, to inspect at least twice a year all kind of premises licensed for sale of drug and cosmetic, and to investigate the complaint made him in a writing. Again, to inspect at least twice a year all premises licensed for manufacturing of drug and cosmetic, to ensure the condition of license is being observed or not. तो रिमेंबर, एक शॉर्ट में आपको दिया है, कम से कम 2-3 बार इसी के पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. तो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट का किस किस सेक्शन में होता है, वो कितनी बार आपको ये करता है, यही दिया है. तो दीज टू अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर गवर्नमेंट एनालिस्ट आता है और गवर्नमेंट बाद में ड्रग इंस्पेक्टर आता है, बाद में डीटीए भी आता है, ड्रग कंजर्वेटिव कमेटी भी आता है, वो अपन बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज नार्कोटिक कमिश्नर. Narcotic Commissioner, obviously this Narcotic Commissioner is appointed under the Narcotic and Psychotropic Drug Act 19. So remember, central government can appoint the Narcotic Commissioner to supervise the cultivation of opium, poppy and production of opium. So whatever the narcotic drugs are there, okay, like opium, poppy or ganja, etc., etc. So remember, central government appoints Narcotic Commissioner to supervise the cultivation of poppy and production of opium. As it is क्वेश्चन पूछा है कम से कम 2-4 बार डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम में, जैसे फार्मासिस्ट एग्जाम होता है, डीआई का एग्जाम होता है, उसमें बहुत बार आ चुके हैं. हु यूज्ड टू अपॉइंट द नार्कोटिक कमिश्नर और हु यूज्ड टू मॉनिटर द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम टू नार्कोटिक कमिश्नर. नॉर्मली क्या होता है कि कंफ्यूज होते गए, इंस्पेक्टर आके अपॉइंट करेगा, इंस्पेक्टर ये करेगा क्या, तो इंस्पेक्टर नहीं करता, यहाँ पे नार्कोटिक कमिश्नर करता है. Central government appoints the narcotic commissioner to supervise cultivation of opium poppy and production of opium to give effect to the provisions of the law. So he will ensure whether the provisions according to law is fulfilled or not. The state government can also appoint such commissioner for their territory. तो स्टेट गवर्नमेंट भी, उनको भी एक पावर्स होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है उनके इलाके के लिए. तो अगेन विल सी द नेक्स्ट. Now places through which drug can be imported in India. So again it is given under Drug and Cosmetic Act. So आप import कहाँ से कर सकते हो ड्रग को, ऐसा नहीं कि कहाँ से भी उठा के ला सकते हो. If you want to import a drug, import a new drug or a drug for personal use or anything. So whatever, you can import the drug for testing, you can import drug for personal use, you can import a drug for manufacturing, etc., etc. For that you have to obtain a license. Okay, what are the conditions for license, etc., etc., they have given in the book. If you want to read, you can read. So which kind of drug can be imported in India, उसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. So places through which drug can be imported into India. So first is nothing but the by railway. So by railway you can import a drug by railway from these parts. This is, that is nothing but the Bahespur. Okay, Firozpur cannot meet. Railway you can import a drug at a Firozpur cantonment, then Amritsar railway station. So those drugs which are being imported from Pakistan, वैसे पाकिस्तान से कुछ import नहीं करते अपन, लेकिन ये पहले के ज़माने का है सब कुछ. By railway you can import a drug from Pakistan at either Firozpur cantonment and Amritsar railway station. Okay, so you can import a drug by sea route of ocean, that is from Visakhapatnam. Okay, you can either import a drug by sea route at Madras, Calcutta, Bombay, Kochi or Visakhapatnam. Then again you can import a drug by air, Madras, Calcutta, Bombay, Delhi and Ahmedabad. So these are the routes, the places which drug may be imported into India. मतलब रेलवे से अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ से ही लाना पड़ेगा, अमृतसर रेलवे स्टेशन या फिर फिरोजपुर कैंटोनमेंट. अगर बाय जहाज से लाना है आपको, शिप से लाना है, बाय सी रूट, so you have to import at Madras, Calcutta, Bombay, Kochi or Visakhapatnam. And if you want to import by air, then you have to import at this, okay, at these airports like Madras, Calcutta, Bombay, Delhi and Ahmedabad. Classes of drug which are prohibited
be imported in India. कौन से ड्रग आप इंपोर्ट नहीं कर सकते? The classes of drug which are prohibited to be imported into India. So these kind of drug you cannot import into India. Kind of drug which are prohibited means which are prohibited मतलब वो मना है. Prohibition मतलब prohibited means ये drugs लाना मना है. ठीक है? कौन से? Adulterated drugs, misbranded drugs, spurious drugs, patent and proprietary medicines, and whose formula has not been disclosed. So these classes of drugs, those are prohibited to be imported into India. Adulterated drug, misbranded drug, spurious drug, patent and proprietary medicines whose formula has not been disclosed. पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होता है कि हर एक का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है, वो डिस्क्लोज नहीं करते, मतलब उसके लेबल पे लिखा रहता है. तो अगर आपने कुछ बाकी जैसे होता है जिंदा तिलिस्मार, आपने नाम सुना होगा जिंदा तिलिस्मार एक आता है, उसके ऊपर कुछ फॉर्मूला नहीं होता. दैट इज अ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन. So adulterated, misbranded, spurious, patent and proprietary medicine whose formula has not been disclosed, and drug claiming cure to the Schedule J disease means अगर कोई ड्रग शेड्यूल जे के अंदर जितने डिसीज दिए जैसे एड्स, हाइपरटेंशन, इपिलेप्सी वगैरह बहुत सारा है, बहुत सारे डिसीज है. तो दोज डिसीज इवन ए ड्रग claims to cure schedule J disease, so that kind of drug also are prohibited to be imported in India. And drug without therapeutic value or drug which are injurious to animal, so these kind of drug or these classes of drug they are prohibited to be imported into India. ड्रग इंपोर्ट करने के लिए रोक. Now duration of import license. So if you got a license for import of drug for any purpose, what will be the duration of that import license? So it will be valid for 3 years. If suspended, you have to apply freshly. So if you want to import a drug, for that you have to obtain a import license. आपको import करना है मतलब उसके लिए लाइसेंस लगता है, नहीं तो फिर कस्टम वाले पकड़ लेंगे आपको, उसके बाद में केस हैंड ओवर करेंगे FDA को. Duration of import license, that is valid for 3 years, and if suspended by any means or any reason, then you have to apply freshly. And loan license. Loan license means what? Suppose you want to produce your own product. आपको जैसे खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है. Now we know that we are very poor people and we don't have enough capital to raise our own industry. ठीक है, अपने पास इतना पैसा नहीं होता कि अपन खुद की इंडस्ट्री कर सकें. What we can do, we can obtain a loan license. Still, if you want to manufacture a drug, if you want to market your own product, you can get a license. That is known as a loan license. आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंपनी ढूंढना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है. With that company, you have to make a contract and you have to apply for license. It is known as a loan license. So you can avail facilities for manufacturing of others. उसके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो और उसके फैसिलिटी यूज करके आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो और वो मार्केट कर सकते हो बाय ऑब्टेनिंग लोन लाइसेंस. जो भी इंस्पेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? उस इंडस्ट्री में होगा जहाँ से आप बना रहे हो. लॉट ऑफ PCD franchises drugs are available in the market. इवन कोई तो सिर्फ सेल्स में जो इन्वॉल्व है, इवन एमआर लोग जो है, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 4-5 साल काम कर दे, काम करने के बाद उनके पास कुछ सेविंग जमा हो गई, वो खुद का ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दे. मतलब कंपनी का काम साथ साथ में क्या बोलेंगे, सर ये ले लो, ये अवार्ड का प्रोडक्ट है, और उसको तो मालूम है कि अवार्ड लेता है तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा ये एमआर, बाहर से बना के लाएगा बद्दी से या फिर कहाँ से भी लेके आता है. दिल्ली में तो बहुत सारी कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मुंबई में भी है, औरंगाबाद में 2-3 है. वहां से बना के लेगा और डॉक्टर को बेचेगा, बोलेगा इसको लिख लो, मतलब खुद का ही प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा बाय टेकिंग अ लोन लाइसेंस. व्हाट इज द वैलिडिटी फॉर लोन लाइसेंस? दैट इज अ 5 years. Okay, so you don't have your own manufacturing unit, if you don't have your own manufacturing facility, still if you want to market your product, still if you want to market your own brand, so you can apply for loan license, and after satisfying the conditions, after fulfilling the norms, you can get loan license and you can produce whatever you want. Okay, then remember the duration of import license is 3 years and duration of loan license is 5 years. validity कितना होता है? 5 years. Now license to sell a drug by retail.
License to sell a drug by retail is valid up to 31st December of year. As it is question आ चुका है. So license to sell a drug by retail is valid up to dash. नीचे ऑप्शन में आएगा 31st जनवरी या फिर 30 दिसंबर या नवंबर मार्च 31st मार्च, क्योंकि बहुत सारे 31st फाइनेंशियल ईयर मार्च का होता है ना, 31 मार्च मार्च का एक ऑप्शन में आएगा. So remember license to sell that is valid up to 31st December of every year. एक साल के लिए valid रहता है and you have to renew that license within 6 months of expiry. What are the Schedule W drug? Schedule W drug question इसके ऊपर भी आ चुका है. Schedule W means what? Drugs marketed under the generic name only. ठीक है, Schedule W. तो यहाँ पे क्या रहेगा? Generic drug रहेगा. मतलब drugs which are marketed under the name of generic drug. Generic मतलब generic name से ही उसका marketing होगा. So list of drugs which are marketed under generic names only. So what are the drugs? Examples of drugs. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कैसा? One of the following drug is not a Schedule W drug. या फिर कैसा भी आएगा? One of the all of the following drugs are belongs to Schedule W as per DNC Act except. यहाँ पे याद रखो analgin. First drug is analgin. Analgin, aspirin and their salts, then chlorpromazine and its salts, ferrous sulfate, okay, then piperazine and its salt. तो ड्रग कितना देखो, एनाल्जिन पहला हुआ है, एस्पिरिन उसके सॉल्ट्स, उसके बाद क्या है क्लोरप्रोमाजिन, चौथा क्या है फेरस सल्फेट, मतलब सॉल्ट ऑफ फेरस सल्फेट एस्कॉर्बेट वगैरह वगैरह सब. नेक्स्ट वन इज पिपराजिन. देखा होगा कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है पिपराजिन सैचुरेट सिरप आईपी, इतना ही लिखा है, उसका ब्रांड नेम नहीं. डब्ल्यू मींस लिस्ट ऑफ ड्रग marketed under generic name only. नेम से आता होगा एनाल्जिन, एस्पिरिन, फेरस सल्फेट, पिपराजिन एंड क्लोरप्रोमाजिन. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. देन शेड्यूल वाई के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. सो व्हाट इज शेड्यूल वाई? इट इज नथिंग बट द रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. ओके, रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, इट इज गिवन अंडर द शेड्यूल वाई. रिक्वायरमेंट और कंडीशंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, इट इज गिवन अंडर शेड्यूल डब्ल्यू. So in this, written informed consent from the patient should be obtained from every subject participating in the every clinical trial. Consent form होता है. आप clinical trial के लिए subject choose करते हो. So in the phase first, normally healthy subjects or healthy participants are there. So in the phase second, again homologous population. In the phase 3, heterologous population. So whatever subjects you want to take for clinical trials, so for that you have to obtain a written consent from those patients. हरकत प्रमाण पत्र जैसे बोलते हैं ना अपन, हरकत प्रमाण पत्र द्या बैंक के वाले लोन. you have to obtain an informed consent. consent form उनसे लेना पड़ता है कि अगर कुछ हमको हो गया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी. written informed consent should be obtained from the every subject participating in the every phase of clinical trial. consent form should be authorized by ethical committee. consent फॉर्म जो है उसके ऊपर जो मैटर रहता है क्या क्या होना चाहिए, वो उसका ऑथराइजेशन कौन करता है? इथिकल कमिटी. इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट आल्सो. नेक्स्ट इज नथिंग बट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. इसके ऊपर ही कम से कम 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है. मेंबर्स, so what is meant by DTAB? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. ओके, व्हाट इज DTAB? so the DTAB is nothing but it is a board, okay, under the Drug and Cosmetic Act only. The name indicate Drug Technical Advisory Board. So it is a board of members which are constituted to give advice to the central government on the technical matters of drug. ड्रग के रिगार्डिंग जो मैटर्स है उसके लिए एडवाइस करने के लिए ये बोर्ड का गठन किया जाता है. किसको एडवाइस करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को. सो सेंट्रल गवर्नमेंट forms or constitute a DTAB, Drug Technical Advisory Board. What are the members of DTAB? So what will they do? They will advise. Okay, they will advise on a technical matters of drug, like डोज कितना होना चाहिए इस ड्रग का, एडवर्स इफेक्ट प्रोबेबल क्या हो सकते हैं, मतलब पूरा ड्रग के बारे में एडवाइस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और पीसीआई को. सो द DTAB board, that is Drug Technical Advisory Board, they used to advise on a technical matter of drug to the central government and Pharmacy Council of India. Okay,
So what are the members of DTAB? What are the members of DTAB? So first, there are either elected members, यहाँ पे इलेक्शन हो गया आएंगे कुछ members. There are some nominated members, ये nomination हो जाएगा उनका. There are certain ex officio members. First we'll see the elected members. What are the elected members? First, elected members. So first, one teacher from pharmacy background is elected by executive committee of PCI. PCI क्या करेगा? Pharmacy Council of India एक टीचर को इलेक्ट करेगा from amongst themselves. Okay, जैसे होता है ना टीचर from pharmacy background is elected by executive committee of PCI. Okay, then one teacher from medicine for therapeutics is elected by Medical Council of India. So ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक टीचर रहेगा. सो वन टीचर दैट इज इलेक्टेड फ्रॉम मेडिसिन बैकग्राउंड, मेडिसिन और थेरेपेटिक्स बैकग्राउंड फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, दैट इज इलेक्टेड. अगेन वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ICMR, one member elected from ICMR which is a pharmacologist. Okay, then one person from council of CMA, one person from IPA, Indian Pharmaceutical Association, person from 1 2 3 4 5. So elected members कितने? 5. There are 5 elected members for DTAB. Okay, elected members for DTAB. Now we'll see the nominated members कितने हैं देखो. So 2 persons they are nominated by state government from the in charge DCO, drug controller of state. 2 persons nominated, okay, from the state government, in charge DCO of the state. So ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो है उनमें से ही दो कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए जाते हैं. अगेन वन नॉमिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मा इंडस्ट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू नॉमिनेट वन पर्सन फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, दैट इज आल्सो nominated member. Again, 2 government analysts, they are nominated by central government. So total nominated member कितने? 2 plus 1 plus 2, that is a 5 again. Okay, total number of nominated members 5. Total elected कितने? 5. 5 elected, 5 nominate. अभी ex officio देखो, ex officio होते 8. ex officio मतलब क्या? जब भी देखो ex officio कौन रहता है? डायरेक्टर होगा या फिर प्रेसिडेंट होगा या फिर चेयरमैन होगा. ठीक है, डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, DCO, यही लोग एक्स ऑफिशियो होते हैं. एक्स ऑफिशियो मतलब बड़े लोग. बड़ा कौन है? एनालिस्ट थोड़ी बड़ा है या फिर इलेक्टेड टीचर थोड़ा ही बड़ा है. जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दैट इज अ बड़ा आदमी. ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, वो बड़ा आदमी है. डायरेक्टर CDL कोलकाता, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर जो है वो भी बड़ा आदमी रहता है. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ DTAB. रिमेंबर, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यही पॉइंट के ऊपर. नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, इसके बारे में कभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा. एक्स ऑफिशियो कौन है? रिमेंबर, फर्स्ट वन इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज व्हिच इज आल्सो ए चेयरमैन ऑफ दिस DTAB. तो DTAB का हेड कौन है? इज नथिंग बट द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. उसका हेड यही होता है. चेयरमैन कौन है DTAB का? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज इज आल्सो एक्स ऑफिशियो मेंबर. ओके, then second is a drug controller of India. Third one is a director CDL Kolkata. Then fourth one is a director CRI, Central Research Institute Kasauli. Then director of IVRI इज्जतनगर, मतलब डायरेक्टर ऑफ CDL फंक्शन होता है इज्जतनगर में. सो वेटरनरी ड्रग का. सो डायरेक्टर ऑफ IVRI इज्जतनगर and then president of Pharmacy Council of India, then President of Medical Council of India and Director of CDL Lucknow. President, Director and DCO. Director General of Health Services, DGHS. Okay, DGHS, DCO, Directors and Presidents. कौन है? एक्स ऑफिशियो मेंबर. आप इतना सिंपल याद रख सकते हो. डी रखो, डी अगर आया तो इसमें डायरेक्टर आएगा, ड्रग कंट्रोल आएगा, डायरेक्टर आएगा, ड्रग कंट्रोल आएगा. तो DP कौन है? DP है एक्स ऑफिशियो मेंबर. DP मतलब क्या है? D मतलब डायरेक्टर्स. किसके डायरेक्टर्स? सो डायरेक्टर ऑफ योर CDL कोलकाता, डायरेक्टर ऑफ CRI कसौली, डायरेक्टर ऑफ इज्जतनगर. ठीक है, नगर का भी डायरेक्टर. तो जितने भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है वो कौन है? फिर से याद रखो. फर्स्ट, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज DGHS.
which is also a chairman of DTAB. Okay. Then DCO, Drug Controller of India, DCI. Then Director General of CDL Kolkata, Director of CRI, Central Research Kasauli, Veterinary Institute है, उसका Director है इज्जत नगर. Then President Pharmacy Council of India, President Medical Council of India, and Director CDRL, Central Research Laboratory, Drug Research Laboratory लखनऊ. ये एक ऑफिशियल मेंबर दो तीन बार बोला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बना चुका है, अभी क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज द also chairman for DTAB. ऑप्शन में देंगे आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. So obviously this director general health services, he is the chairperson or chairman or head. Pharmacy Council of India under the Pharmacy Act 1948. So before 1930, what was happening? Before 1920, 1930, when there was a independence, भारत आजाद हुआ, उससे पहले क्या हुआ कि ब्रिटिश का रूल था. So there was a British rule on our India. So at that time, all the norms was governed by British government. After that, when India was independent, so at that time there was no control. There was no control who anybody can sell drug, anybody can manufacture drug. So there was no absolute control. Okay. So for that, and in between that, this also British some British also released a press and they have mentioned the adverse effect of drug. Okay, there was a lot of adulteration, misbranding, etc., etc. Anybody can manufacture drug, anybody can sell drug. So for to ensure the control, there was a constitution of one committee known as a drug advisory committee, okay, or a drug inquiry committee. DEC, Drug Inquiry Committee was formed in I think 1930. So the committee was headed by Chopra. Committee. It is also known as Chopra Committee. And on the recommendation of that Chopra Committee, so they told the government that there should have some uniform regarding the pharmacy profession. On the recommendation of that Chopra Committee, so they are recommended to constitute a council of India, Pharmacy Council of India. So this PCI was का year अपन इसका year भी important है 1949. So PCI was constituted in the 1949, May 1949. First we'll see the members. But total members are nothing but the 19 members. कितने हैं? 19 members. Elected members again, nominated members and ex officio. Elected member मतलब क्या? उनमें क्या होगा? उनमें चुनाव हो जाएगा. Nominated मतलब क्या? उनका नाम दर्ज किया जाएगा, डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाएगा. एक्स ऑफिशियो, ठीक है. एक्स ऑफिशियो मतलब ये बड़े बड़े जो हेड होते हैं या फिर डायरेक्टर होते हैं उनका. फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर, 6 members amongst, okay, 6 members are elected amongst which at least one should be teacher from the subject like pharmacy, pharmaceutical chemistry or pharmacology, pharmacognosy. 6 members, they are elected by University Grant Commission from the teachers of Indian University and affiliated colleges imparting diploma or degree courses. So जो भी डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज के लिए जितने भी कॉलेजेस है उनमें इलेक्शन होता है एक मेंबर के लिए, उसमें के 6 मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं. So okay, so there should be teacher from this stream. Then one member is elected by okay, from the Medical Council of India. One member is elected amongst themselves from the member of Medical Council of India. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने मेंबर्स है उसमें भी इलेक्शन होगा, उसमें से एक मेंबर इलेक्ट होके पीसीआई में आ जाएगा. ठीक है. पहले 6 मेंबर इलेक्ट होके कहाँ से आए? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो टीचर्स है आपके वहां से 6 मेंबर इलेक्ट होके पीसीआई में जाएंगे और एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्ट होके वहां पे जाएगा. वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट, वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट. तो हर एक स्टेट से एक मेंबर इलेक्ट होके जाएगा पीसीआई में. तो वो मेंबर क्या होना चाहिए? ही शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. 6 members elected from teachers of UGC, one member elected from the members amongst MCI, one member elected from the should be pharmacist. Okay. So total 8 elected members. कितने elected members? 8.
So there are 8 elected members on PCI. Okay. Now next one is a nominated member. Nominated member कौन से है देखो. Nominated members. Again 6 members they are nominated. 6 members they are nominated by Government of India. 6 members are nominated by Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. Out of 6, 4 should possess degree or diploma in the pharmacy and should be practicing the pharmacy or pharmaceutical industry. ये जो 6 नॉमिनेट होते हैं उनमें के कम से कम 4 क्या होने चाहिए, फार्मासिस्ट होने चाहिए, उनको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए. वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूजीसी एंड एआईसीटी. तो एक मेंबर एआईसीटी नॉमिनेट करेगा, एक मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक मेंबर नॉमिनेट करेगा. तो 6 6 और ये एक एक कितना हुआ है 8. और एक वन मेंबर ऑफ ईच स्टेट. वन मेंबर विल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट who should be registered pharmacist nominated by respective state government or union territory. इलेक्टेड पहले 6 होते हैं और बाद में 2 इलेक्टेड होते हैं, ऐसा टोटल 8. नॉमिनेटेड भी 8 ही होते हैं, लेकिन ये यूजीसी का और एआईसीटी का दोनों का अगर एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया तो 9 बनते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स 8, नॉमिनेटेड मेंबर आइदर 8 और 9. एक्स ऑफिशियो मेंबर. तो रिमेंबर डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद रहेगा या फिर हिज नॉमिनी. ठीक है. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद रहेगा या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. ठीक है. और हिज नॉमिनी एक्स ऑफिशियो. देन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी. What is nothing but the Director Central Drug Laboratory Kolkata. Okay, रहेंगे एक्स ऑफिशियो में. So what are the functions of PCI? Function of PCI क्या है, बहुत सारे हैं. Okay, so first of all to recognize the qualification, maintenance of central register, then to approve the colleges, frame a education regulation. तो एजुकेशन रेगुलेशन जो है वो PCI बनाता है. So PCI बनाता है एजुकेशन रेगुलेशन. So they will prescribe a minimum educational qualification to be a registered pharmacist. They will prescribe the content of course. They will prescribe the subject. They will prescribe the examination authority, then practical training, etc., etc. All the norms. Okay. So again, they will recognize the foreign qualification, etc., etc. They will maintain a central register of pharmacist. Also, they will approve colleges. They will disapprove the colleges if there is a नॉन कंप्लायंस. अगर कोई कॉलेज में नॉन कंप्लायंस होता है अकॉर्डिंग टू द पीसीआई नॉर्म्स, उसका अप्रूवल रिजेक्ट कर देगा. फिर नया कॉलेज है, उसने अगर एप्लीकेशन किया कि हमको अप्रूवल चाहिए तो उनको अप्रूवल देगा आफ्टर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर देंगे. दैट इज ऑल्सो गिवन इन द बुक. सो ऑल द थिंग्स. सो इंस्पेक्टर्स वगैरह कहाँ से आते हैं पीसीआई इंस्पेक्टर्स? दे आर नथिंग बट द टीचर्स. दे आर द टीचर्स फ्रॉम द फार्मा फील्ड. ओके, दैट इज अनदर थिंग. Functions of PCI and all that. So वो भी important है, लेकिन वो बाद में देंगे. Okay. Second is nothing but the State Pharmacy Council. As there is a Central Pharmacy Council or Pharmacy Council of India. तो याद रखो PCI Pharmacy Council of India is also known as the Central Council. Another one is the State Pharmacy Council or Joint State Pharmacy Council. ठीक है. Remember the term life जो PCI होता है, PCI का मेंबर का इतना टर्म कितना होता है. So the term of member of Pharmacy Council of India is a 5 years. इसके लिए वो मेंबर रहेगा. ठीक है. term of member for Pharmacy Council of India it is a 5 years. 5 साल तक वो मेंबर रहेगा. 5 साल के बाद में क्या होगा, री इलेक्शन होगा, री नॉमिनेशन होगा. ठीक है. So after 5 years after the term, if the term is over, after that there will be re-election or re-nomination, right? Now again, if any members of PCI is absent for 3 consecutive meetings without any reason or without any prior intimation or without any valid reason, then he will be terminated from the member of PCI. का कोई मेंबर 3 मीटिंग के लिए absent रहता है, एक के बाद एक 3 मीटिंग के लिए absent रहता है. So if any member of PCI is absent 3 consecutive meeting
without any prior intimation or without any prior intimation or without valid reason, he will be terminated as a member of PCI, State Pharmacy Council. Members of State Pharmacy Council, Joint State Pharmacy Council में वो 2 पॉइंट्स भी याद रखो पीसीआई में, बाद में अगर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, ही बोलो. So remember the term life of member of Pharmacy Council of India is 5 years again. Okay, after 5 years there is a re-election or there is a re-nomination. Right? If any members of Pharmacy Council of India is absent for 3 consecutive meetings, prior intimation or without prior notice and without valid reason, his term will be dissolved, will be rejected as a member of PCI. His seat, there will be either re-election or re-nomination. अगर वो elected है तो re-election होगा, अगर वो nominated है तो re-nomination होगा. Members of State Pharmacy Council, Joint State Pharmacy Council. Suppose that if any state is very small, कुछ अगर स्टेट एक बहुत बड़ा स्टेट है तो उसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा. अगर दो या तीन छोटे छोटे स्टेट है तो दे कैन एग्री themselves and they can make a contract, they can form a joint state pharmacy council. 3 स्टेट के लिए एक ही काउंसिल बनेगा, 3 स्टेट 4 स्टेट. ओके, so if they are agree, if they forms a contract central government for a this joint state pharmacy council, okay, they can form. Now what are the members? One is a elected member. Elected member कितने रहेंगे देखो. One is a elected member. So in the state pharmacy council, 6 members are elected by registered pharmacist among themselves. Registered pharmacist elect होके जाते हैं state council में. Members are elected by registered pharmacist of the state. ठीक है, अभी इलेक्शन हो चुका है. रिसेंटली एक महीने के पहले ही इलेक्शन हो चुका है, मुझे भी आया था बैलेट पेपर. I am also registered pharmacist. Then second, one member is elected from registered medical practitioner elected by medical council of state. State का जो medical council है उसमें से एक बंदा elect होके state council में आ जाएगा, state pharmacy council. Are the nominated members? There are 5 nominated members. They are nominated by state government, out of which 3 should have degree or diploma in the pharmacy or pharmaceutical chemistry. What are the ex officio members? Administrative office, chief administrative officer or in charge of medical and health services of the state or his nominee. Officer in charge of drug and cosmetic drug, okay. Officer in charge for DNC Act of the state or his nominee. Third, one government analyst nominated by government analyst elected, government analyst nominated by state government. These are the ex officio. So administrative officer of health and health services of state or his nominee. An officer in charge of DNC Act of the state or his nominee. Then one government analyst nominated by state government. ये हो गए ex officio member. Okay, 6 elected कितना है? 7 है. 7 elected member, 5 nominated member and ex officio member. These are the members of state pharmacy. Function क्या है? The function of state council to maintain a first register, to maintain a state register. ठीक है, to enter a, ठीक है, to enter a name of pharmacist in the register. जब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो आप कहाँ पे जाते हो? फार्मेसी स्टेट काउंसिल में जाते हो, सेंट्रल काउंसिल में नहीं जाते. ठीक है, महाराष्ट्र का कोई बंदा है उसको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ उसको कहाँ पे करना पड़ता है? फार्मेसी काउंसिल लोकेटेड इन द मुंबई. ठीक है, मुंबई में जाके उसको रजिस्टर करना पड़ता है. So what they do? They used to make a 3 registers. के पास 3 registers maintain करे. They used to maintain 3 registers and also among themselves they elect the chairman, treasurer, they elect the treasurer, chairman, etc. staffs and all that. Okay. Again, they have to pay the registration fee. They used to decide the registration fee. They used to decide the minimum qualification to be रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वो डिसाइड करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाले. तो वो फीस भी डिसाइड करते हैं. सो द अमाउंट और द फीस दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द applicant to be a registered pharmacist, so that fees recovery will be done
and the amount of 30% amount of that goes to the PCI सेंट्रल काउंसिल परसेंट जो स्टेट काउंसिल में जो एप्लीकेशन फीस आता है उसका 30% PCI हो जाता है. ठीक है. So these are the members of state pharmacy council. Now we'll see the members of joint state pharmacy council. Joint state pharmacy council अगर दो तीन स्टेट एक साथ में आके any if 2 or 3 states they are in a willing to get or they are willing to get from a joint state pharmacy council, they can make a joint state pharmacy council for themselves. मतलब दो तीन स्टेट के लिए एक ही काउंसिल हो जाएगा. Elected member 3 to 5 members are elected from registered pharmacist of each participating state. One registered medical practitioner is elected from the medical council of each participating state. Nominated member कितने हैं देखो. 2 to 4 members are nominated from each participating state. Each more than 50% should be from pharmacy background. Ex officio members, a chief administrative officer in charge of medical and health services of each participating state or his nominee. Then officer in charge of drug and cosmetic act of each participating state or his nominee. One government analyst nominated by each participating state. These are the members of joint state pharmacy council. फंक्शन वगैरह अपन बाद में देख लेंगे.